Good evening, everyone. I am Rupa, as I think many of you may have met me already. I welcome you all to the first session, Kalam in Coimbatore. Prabha Ketlan Foundation recently flagged off its literary journey in Coimbatore under the auspice of its stellar initiative Kitab. Many of you were here for the event, and I'm really happy to see you all again in this event today. It was quite a momentous event to unveil Srishti Jha's book, authorized biography of Usha Uttup, entitled The Queen of Indian Pop, in the presence of the pop diva herself. We are delighted to continue the literary journey in Coimbatore with another sparkling session of Kalam. We are glad to welcome Mr. Rasheed Kidwai in Coimbatore, and we look forward to hearing his conversation with Ms. Apra Kuchal about his professional journey and works. Today's Kalam event has been organized by Prabha Ketlan Foundation in association with Welcome Hotel by ITC and the Ehsas Women of Coimbatore, which is Poonam Bafna and myself, Rupa. This event is supported by Sri Cements Limited. Before I introduce the author and the conversationalist, please allow me to say a few words on Prabha Ketlan Foundation and the noble initiatives that they take to widen the reach and readership of English literature, Hindi literature and regional literature. Prabha Ketlan Foundation is a Kolkata-based non-profit trust founded by an eminent Indian literature, entrepreneur, philanthropist and social activist and feminist, late Dr. Prabha Ketlan. Guided by her philosophies and policies, the foundation has achieved stellar heights in creating a cultural capital through landmark initiatives and activities. It's been a continual journey since then, and all its initiatives have become landmark events that enjoy a unique identity and a niche audience. India is a land of multiple assets, be it literary jewels, art and cultural treasures. The essence of the foundation is the soulful amalgamation of multicultural diversities of India. The philosophy of unity in diversity has been inspiring Prabha Ketlan Foundation to create boutique initiatives and activities that showcase the priceless assets of India for the last 4 decades. Amongst the bouquet of literary initiatives of Prabha Ketlan Foundation, Kalam is one of the brightest blossoms. Kalam is a unique literary vertical of the foundation which encourages and reaches the readership of Hindi literature. Kalam popularizes Hindi literature in India and abroad, and it provides a platform for veteran and young authors to talk about their writings and love for vernacular literature. As a fond gathering of authors with audiences, each session of Kalam is insightful, inspiring, enriching and enjoyable. Before the session starts, I would like to present the speaker of today, Mr. Rasheed Kidwai. He is a journalist, author, columnist and political analyst. He is a visiting fellow with the Observer Research Foundation, a former associate editor of The Telegraph. He is a graduate from the St. Stephen's College, New Delhi, and holds a master's degree in mass communication from the University of Leicester in UK. He also contributes to numerous television channels, including CNN News 18, ABP News, NDTV, India Ahead News, and India Today TV. In conversation with Mr. Rasheed Kidwai is Ms. Apra Kuchal, who is the honorary convener of Rajasthan and Central India Affairs of Prabha Ketlan Foundation and an Ehsas woman from Jaipur. I request Ms. Apra Kuchal to please come on stage with Mr. Rasheed Kidwai and start the conversation for the evening. तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कलम जो प्रभा केतन फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, और कलम हम विभिन्न शहरों में कलम को लेकर आते हैं और ये कोयम्बटूर का पहला कलम का कार्यक्रम है। कलम के माध्यम से हम हिंदी में जो ऑथर्स लिखते हैं, हिंदी भाषा में जो ऑथर्स लिखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। और जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि प्रभा केतन फाउंडेशन के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। हम लोग भाषाओं के ऊपर, हम लोग कला संस्कृति के ऊपर काम करते हैं। सो इन फ्यू मंथ्स यू विल आल्सो गेट टू witness and you will also get to attend events like the Right Circle or other initiatives. So the Right Circle is an initiative for English, Kalam is an initiative for Hindi, Kitab is an initiative for book launches, Loves is an initiative for Urdu, Arabic, Persian,
Akhar is an initiative for regional languages. We also have events that support a lot of cultural programs, music, art, dance, theatre. So thank you so very much, and please be in touch with the SRs Women of Coimbatore for further information. And if you have any friends who'd like to attend, please feel free to give their names to the SRs Women. We are very very thrilled that we have with us Mr. Rasheed Kidwai. तो आज के कलम का आगाज़ हम रशीद किदवाई साहब के साथ करेंगे। रशीद जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, he has a very very long career in political journalism, I would say, and you know he is somebody that if you sit with him, आपको 5 मिनट से 5 घंटों का पता ही नहीं चलेगा। और thank you so very much, Mr. Kidwai, for your presence. Thank you, Pratik. Good evening, everyone. I think it's a great pleasure and honor to be here in Coimbatore, and I'm grateful to the organizers, Prabha Khaitan Foundation, Poonam, Rupa, and all of you who are having found time to be here. And we basically, I was just discussing with Aparaji that we want to make it actually far more informal and interactive, so that it's always nice and good to hear the various points of view, various shades of opinion, etc. That's it. Thank you very much. Thanks. रशीद जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और जो कलम का हमारा सेशन होता है वो एक किताब के ऊपर नहीं बल्कि एक फ्री व्हीलिंग सेशन होता है, जिस पर हम ऑथर या पोएट जो भी आते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी राइटिंग्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज जो भी सवाल होंगे वो उनकी राइटिंग्स पर होंगे, उनकी विभिन्न किताबों के ऊपर होंगे। तो रशीद जी, मैं शुरुआत करती हूँ 24 अकबर रोड से। 24 अकबर रोड इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर बुक, और उसमें जिस तरीके से आपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करा है वो बहुत ही एक अलग तरीके से करा है। क्या वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए, और इट केम वेरी नेचुरली टू यू? Thank you. Actually, 24 Akbar Road is a book that is about the Congress party. As many of you would know, in Delhi, the Congress office is called, the number is 24 Akbar Road. It was used to be, many people did not know. In fact, when that Aung Sui came to India, and when UPA government was there, so Sonia Gandhi actually acknowledged that fact, that she came to know through my book that was a Burma house, and this was that house was allotted to Aung Sui's mother, who was at that time Burmese ambassador to India. So, and when Rajiv Gandhi and Sanjay Gandhi were very young, they used to go there and play with her. So a lot of history is there in every political party. We can always say that a political party is good or bad. That's a matter of personal choice or judgment. But I thought of writing to answer specifically what Aparaji is asking, that what is it? ये क्या बात है कि जो मतलब दैट कीप्स कांग्रेस टिकिंग, वो ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस जो है वो कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, और उसका क्यों डिक्लाइन, बिखराव क्यों हो रहा है। और उसमें मुझे बहुत सी दिलचस्प बातें पता चली, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स which perhaps people do not know. For instance, you'll be surprised to know that most political parties have many office bearers. We get to know general secretary, vice president, treasurer. The political parties actually don't pay salaries to their leaders, unless they are member of parliament or a member of legislative assembly or something like that. Now that's also one reason or a source of corruption, because everyone needs a certain lifestyle, certain this. And when I asked, since I knew during my research, I talked to a lot of Congress leaders, and they said, नहीं, this is sense of service. गांधी जी की पार्टी है, हमें कोई पैसा लेके थोड़ी ना काम करते हैं। But you must understand that, if somebody, and as you know that today's Congress strength in Lok Sabha is just 52, 53 Lok Sabha seats, even in state assemblies over 7,000, I think the Congress figure is just about 600 or so. In that context, but the leader, the party is very big. There are thousands of people who are office bearers of the Congress party. How do they, kind of run their kitchen?
So these are the things that are not talked about, and I mean this is the same thing with the BJP, with the same thing with most political parties, that political parties actually don't have a salary structure or a kind of grades or anything like that. This is something we need to remember. I also discovered that the Congress party, which was headed by a woman leader for so many years, 23 24 years, since 1998, did not have a toilet for women in the entire party office, and that actually offended a lot of people when I wrote that, including Digvijay Singh, who had come to for my book release, and he said that you are picking nitpicking, you are saying the toilet is not there. I said this is very important, because before, of course, Modi ji started all this Swachh Bharat thing and all. I said this is very important. So every general secretary had a kind of attached bathroom. But for the workers, for political activities, for journalists, for everyone to come in, there were no toilets at all. So after my book, 2-3 toilets were constructed. So anyway, this I have got into a very small thing, but I think the big picture of the Congress is documented there. A critical evaluation. It's not in praise of. It's not a sponsored book or exercise. So I criticized, and I kind of tried to evaluate what makes the Congress tick. The title of the book was Rise and Fall of the Congress. Also, politicians like artists, उनका कोई ग्रे एरिया नहीं होता, या तो लोग उनको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। शाहरुख खान को या तो आप पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को या आप पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे। तो इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या एक ऑथर के लिए जब वो पॉलिटिकल अपनी स्टोरी लिखता है, जब वो पॉलिटिकल व्यू अपना देते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप कैसे अपने फैक्ट्स चेक करते हैं? जी, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। मुझे खुशी है कि आपने ये मुझसे सवाल पूछा। मैंने जो अपनी पहली किताब लिखी थी वो एक सोनिया गांधी की इंडिपेंडेंट बायोग्राफी थी। इट्स कॉल्ड सोनिया बायोग्राफी। इट वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन इंडिया। और उस समय मैं सोनिया गांधी से मिला और उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप क्यों मेरे बारे में क्यों लिखना चाहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ सन 2001-2 की बात है, 2002 की। शी वॉज आउट ऑफ पावर। शी सेड व्हाई डू यू वांट टू राइट इट। तो मैंने कहा देखिए, लोगों को आपके बारे में एक नेचुरल एक इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है, पीपल वांट टू नो। और उस टाइम पे भी और आज भी अगर आप, जैसा अपना जी ने कहा कि आप 10 में से 10 लोगों से आप पूछेंगे तो उसमें काफ़ी आपको मिक्स उनके बारे में रिस्पॉन्स मिलेगा कि लोग उनके बहुत क्रिटिकल होंगे या बहुत उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन एक उनका इवैल्यूएशन कि वो क्या है, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी पढ़ाई लिखाई में कैसी थी, उनका शादी के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मैं अपना जी को बता, उसमें किताब में मैंने एक और लिखा। जब वो आई, जब उनकी शादी हुई, 1968 की बात है, जनवरी में आई वो, तो उनको उस समय इतना होटल का कल्चर नहीं था और इंदिरा गांधी की वो डॉटर इन लॉ होने वाली थी। सो इंदिरा गांधी वाज नॉट ओके दैट शी शुड बी स्टेइंग इन प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस इन इंदिरा गांधीज हाउस बिफोर मैरिज। तो उन्होंने उनका, और होटल में भी नहीं रहना था इन दिल्ली, यू नो, अशोका होटल वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सम अदर। सो इंदिरा गांधी थॉट ऑफ दिस थिंग। उनकी वो बहुत क्लोज फ्रेंड थी तेजी बच्चन, जो पोएट भी थे, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के घर में वो रही। दैट टाइम अमिताभ वाज नॉट सो फेमस। तो आज भी जो प्रियंका और राहुल हैं वो अमिताभ बच्चन को मतलब अपना मामा, जो अवध में मामू कहते हैं, तो मामू के नाम से बुलाते हैं। सो सोनिया गांधी करीब 1 महीना वो उनके घर में रही, बच्चन फैमिली के साथ में रही। और जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आई हैव 3 मदर्स। अभी उनकी मदर की डेथ हुई तो मैंने उसमें उसका रिकलेक्शन भी किया था कि एक तो उनकी मदर जो उनकी वो थी पौला, उनकी मदर जो थी, दूसरा उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी मदर के समान समझा, और तीसरा जो थी उन्होंने तेजी बच्चन को अपनी माँ समझती थी। बाद में वो बड़ा दोनों फैमिलीज में झगड़ा हुआ उसके बारे में। वो टेल ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो एक बहुत ही आपका चैप्टर था, बहुत ही पॉपुलर चैप्टर था। अक्सर बहुत सारे लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ये मेरा एक बगैर उनको किसी की मतलब किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करते हुए कोई स्कैंडलस चीज़ें लिखना, कोई सेंसेशनल या बेतुकी बातें, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स और रेफरेंसेस के साथ चीज़ें डाल रहे हैं तो वो लोगों को उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है एंड दे लाइक इट। आई थिंक पीपल हैव अ राइट टू नो। ये हमारे जितने भी लोग हैं
पॉलिटिकल पब्लिक फिगर्स हैं, उन सब के बारे में हमें एक हक होना चाहिए, हमें जानने की उनकी उनकी लाइफ कैसी है। अगेन आई सेड नॉट वेरी पर्सनल थिंग अबाउट, बट एक ब्रॉड उनका हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी मेक आवर चॉइसेस बेटर। तो जितनी भी मैंने किताबें लिखी हैं वो ज़्यादातर पर्सनालिटीज़ के ऊपर हैं, और उसमें हमेशा हमेशा मेरा प्रयास ये रहा है कि उनको अच्छा या बुरा दिखाने के बजाय उनको आप एक उनका जो पर्सनालिटी है उसको सामने लाएं, लेट द रीडर्स डिसाइड। इट्स नॉट अ इजी थिंग। एंड जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, देखिए एक तो लॉज होते हैं, डिफेमेशन लॉज हैं, कानून कचहरी का है, क्रिमिनल लॉज कैन बी फाइल्ड इफ यू राइट अगेंस्ट डिफेमेटरी। पर सबसे बड़ा कानून जो होता है वो आपके मन में होता है, नियत में होता है। सो इफ योर इंटेंशन इज राइट, देन पीपल कैन, इवन रीडर कैन सी थ्रू दैट। ऑल ऑफ यू आर बुक रीडर्स, यू नो इट, यू अंडरस्टैंड व्हेन समबडी इज बीइंग ओवरटली क्रिटिकल, मतलब वो अपना एक गुस्सा निकाल रहा है, एंगर है, या जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज। और समटाइम ऑफ कोर्स एज अ जर्नलिस्ट और एज अ राइटर आई कैन से वी समटाइम बिकम लिटिल sympathetic also, because it's quite natural. So this is thing happens. I think ethical kind of background value system, it's very much important. It's not just important in the armed forces. I think it's important in all walks of life. आपने एथिकल सिस्टम की बात करी और आपने एक बैलेंस मेंटेन करने की बात करी। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी किताब हाउस ऑफ सिंधियाज, अगेन एक बहुत ही सुपर किताब, एक बहुत ही ऐसी वेल यस वंडरफुल वेल स्पोकन एंड वेल टॉक्ड अबाउट बुक, और इसके अंदर जो किरदार हैं वो एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, एक से बढ़कर एक, सबकी एक अलग कहानी। हाउ डिड यू मर्ज ऑल द स्टोरीज टुगेदर? इसी में दूसरा सवाल ये है कि वाई हाउस ऑफ सिंधियाज? सिंधियाज के ऊपर बहुत कुछ गूगल पर भी उपलब्ध है, तो क्या एक ऐसी चीज़ है कि पाठक को आपकी किताब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी? जी देखिए, हाउस ऑफ सिंधियाज का लिखने का मुझे एक दिन, देखिए आज अगर मैं आपसे जितने भी इस कमरे में लोग मौजूद हो, मैं अगर उनसे कहूं कि कोई ये बताइए कि कौन सी ऐसी ख़ानदान है या राजनीतिक फैमिली है जिसको लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मतलब उनके लोग बहुत सारे सत्ता में आए हों या उन्होंने सत्ता का सुख लिया है, आप में से मुझे लगता है कि 80-90% लोग जो हैं वो नेहरू गांधी फैमिली का नाम लेंगे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, नाउ राहुल गांधी। उसमें एक सच्चाई है, लेकिन मैंने जब सिंधिया का सदन और इस किताब में मैंने लिखा है कि इनकी जो 1781 में जो पहली बार राणोजी वो महाराज बने थे, महाराज मतलब राजा, और उनको मतलब जागीर मिली थी उस वक्त, उससे लेके आज तक, आज हम जो 29 सितंबर 2022 तक बात रहे, ये परिवार एक भी दिन बिना सत्ता के नहीं रहा है। दिस इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। There is no family. There are many families in Britain and all, which were, of course, they had a longevity, but the transition from monarchy to democracy was not smooth. यहाँ के ऊपर भी इतने नवाब ऑफ ट्रैवनकोर थे, निज़ाम हैदराबाद थे, all of them vanished. But Scindia family, so it factually not a single day, because the day this partition happened, I mean independence happened, this Maharaja of Gwalior became Rajya Pramukh, which is equivalent to governor, and he was there till 1956. And at that year, this Rajmata Scindia, who's present day Jyotiraditya's grandmother, she became member of parliament from Congress for twice. And in all the time, so after Rajiv Gandhi's assassination, there was a gap of 7 years that no member of Nehru Gandhi family was in parliament or in state assembly. But in case of Scindias, they were always been there. And Vasundhara Raje Scindia, Yashodhara Raje Scindia, Jyotiraditya Scindia, Madhava Scindia. This is just one aspect. Second thing, many of you here, again I am saying, I don't think I'm questioning you or your thinking. I'm saying this on. We all are very much against the dynasty culture. We think dynasty is a curse. Dynasty is an antithesis of democracy. It's a negation of democracy. It's unfair. Criticism is very valid, but Apnaji, allow me to say this. I want to provoke you also. So
if the dynasty culture was not there, the representation of women in Indian parliament would have been far less. Because if you see, there are very few women in state assemblies or in parliament, and many of them, like this Scindia family, many of them, Vasundhara, Yashodhara ji or Rajmata Scindia, they all came because they were dynasts. So I have done an informal study about 30-40% of women who have been elected at various state assemblies and in parliament, they are second or third generation dynasts. In case of Muslim women, it is far more glaring. You see, since independence, there have been, since 1951-52 elections, there have been over 9,000 Lok Sabha MPs, over 9,000 Lok Sabha MPs. The number of Muslim women is 21. Now, democracy is about numbers. So, if you say that there is 16%, 15% Muslim population and 8% women, then the figure should have been far more. So, I am saying that when we say that, dynasty is bad, this is not in defense of dynasty, but this is just to give you perspective that many, and this I am saying Muslims, it will apply to Dalits, it will apply to many other, social segments of society. Because our democracy is not foolproof, it's flawed. Right? Like in many other democratic systems, it's flawed. It has its flaws. We have so much of defection and all these things to keep taking place, misuse of money. So all these problems are there. So unless you talk about it, so this is there. And of course, I would want to read you कि इसमें वो है सास बहू का जो झगड़ा होता है वो सिंधिया फैमिली में भी था. देखिए बहुत वो लोग भी, हमें लगता है कि वो राजे महाराजे हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रही होगी, बड़ी आसान रही होगी. बहुत राजमाता सिंधिया को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी. वो पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल. उनके अपने हस्बैंड से जो रिलेशंस थे, अपने बेटे से जो रिलेशन थे, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने अपनी वसीयत करके गई कि उनकी जब चिता जलाई जाए तो माधव राव जो उनके इकलौते बेटे थे वो न जलाए. और माधव राव जो थे, लेकिन उसमें पैचअप भी हुआ था क्योंकि जब राजमाता बीमार थी, मैंने उसका वो लिखा, तो माधव राव जाते थे, हॉस्पिटल में थी वो, और वसुंधरा जी ने मुझे बताया था, वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर भी रही थी, कि हम लोग वो हर टाइम रहती थी अपने मदर के साथ आखिरी दिनों में, लेकिन कहते थे वो भैया की आवाज़ आती थी चलने तो उनकी आँख मतलब खुलती, आँखों में चमक आ जाती थी. Please don't look at as a preference for male child, but I'm just saying there were very fragmented people. तो उसके मतलब उनके आपस में झगड़े बहुत थे, तो वो इतना ज़्यादा, और सिंधिया जी उनका हाथ पकड़ के मतलब हनुमान चालीसा पढ़ के बैठते थे और फिर चले जाते थे. तो ये एक बॉन्ड था. हम तो सब मतलब पॉलिटिकली हम कहते हैं उनमें आपस में दुश्मनी थी, एक कांग्रेस में थे, एक बीजेपी में थे, एक को इंदिरा गांधी ने जेल कराया, वो सब जेल वेल का भी मैंने खूब अच्छे से वर्णन किया है. That tells you how difficult it was for Rajmata Scindia and Maharani Gayatri Devi, to be in Tihar jail, be treated like for 19 months, to be treated like. So there are a lot of stories are there, stories which are factual and stories that will not tell you, it's not anti Indira Gandhi or pro राजमाता और अदर वे राउंड. आप उसको अगर पढ़ेंगे, मैं अपनी किताब की खूबी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग भी हाड़ बांस के इंसान होते हैं. वसुंधरा जी की भी बड़ी डिफिकल्ट लाइफ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी की सारी हमें लगता है कि इनकी लोग ये करोड़पति हैं तो इनका जीवन स्वर्ग होगा, ऐसा नहीं होगा. सो जो ट्रायल एंड जो टेस्ट होता है, परेशानियाँ होती हैं, दुश्मन, वो हर एक के साथ होती है, और उसमें कोई छोटा बड़ा मतलब अमीर गरीब का भेद नहीं होता. That's so wonderfully said. Actually, we think that they have a very, very different lifestyle, and they live in big places, big palaces, but that is not the question, because with positions comes problems too. आपने डेमोक्रेसी की बात करी, आपने डायनेस्टी की बात करी. एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल आज के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी. What is the role of a vibrant opposition in democracy today? ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ जो ऐसा सोचते हैं कि जो जीत गया उसको वही मतलब वो सत्ता का है, वही पावरफुल है. हम ये नहीं देखते कि अगर 100 लोग में अगर किसी को 51 वोट मिले हैं तो जो 49 लोग हैं उन्होंने भी वोट दिया है और उनकी भी एक अपनी सोच है. वो ठीक है, वो नंबर से, संख्या के हिसाब से कम है, तो उसी हिसाब से विपक्ष का जो अपोजिशन का रोल ऑफ अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट एक्ट्स लाइक अ चेक.
और उसको बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अपोजिशन और सरकार में बड़े अच्छे संबंध रहे हो. We are speaking in place in Tamil Nadu where actually the divide between opposition and ruling party has been very glaring and very personal. Again, you can take two sides of how Jayalalitha was treated by Karunanidhi ji or Karunanidhi had treated her. Even in the assembly, state assembly, there were all kind of things that are were very, very, I would say, shameless and scandalous incidents took place by both sides. They were dragged and they were pulled out and all kind of things were there. So this is not a thing. I think opposition has a very, because there is a automatic system is of check and balances, and they must have a respect. In our country actually we have a very good tradition. मैंने आपके हाथ में जो किताब है वो भारत के प्रधानमंत्री में उसका लिखा है कि जब 62 का जब वॉर हुई और उसमें हमसे चूक हुई थी, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े एक मतलब नौजवान उस वक्त मेंबर थे, और उन्होंने जब लड़ाई चल रही थी उसी बीच में नेहरू से कहा कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, कॉल पार्लियामेंट सेशन बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेहरू कॉल्ड पार्लियामेंट सेशन, एंड दैट्स वेयर वो द रेजिग्नेशन ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर वाज आल्सो टेकन. सो दिस इज दिस काइंड ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी. जब राजीव गांधी का की डेथ हुई तो उस वक्त अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं जो 84 में आप लोग जानते हैं, ही हैड लॉस्ट इलेक्शन फ्रॉम Gwalior, he was not member of parliament and he had some medical problem that could not be cured here. So Rajiv Gandhi called him and sent him as a part of delegation to the US, official delegation. But it was actually meant to allow Mr. Atal Bihari Vajpayee to have a treatment. तो जब राजीव गांधी गुजर गए तब उन्होंने कहा कि देखिए ये उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया था, और पार्लियामेंट में तो वो लड़ते आए थे. आप लोग बहुत से लोग टीवी देखते होंगे, जो डिबेट्स होती है उसमें भी ऐसी पॉलिटिशियन लड़ते हैं, they fight like cats and dogs, but actually before the program and after the program they are very friendly, they sit and chat and they just keep gossip about each other. वो होता नहीं है. So we get carried away and we carry some kind of, I'm not talking about you but I'm saying generally some people carry a lot of bitterness on because of political ideology or political leadership or political thinking. It's not worth, because end of the day those politicians are very, I can give you a lot of examples. They all are Parliament of India is a very cozy club also. वो सब उसमें उनमें आपस में एक अच्छी फंक्शनल रिलेशनशिप होती है. बाहर कुछ भी दिखाएं, अंदर से उनमें बहुत अच्छे, और होना भी चाहिए. So to answer to your question, I think this kind of pressure on the government, whichever is the government, is very important. If the opposition is not there, then it will be very unfortunate. Coming to your book, 50 Figures Who Influenced Indian Politics, how did you choose these 50 figures? I mean, was there any kind of poll you did, या फिर आपने कोई इस तरीके का सर्वे किया, या ये आपके 50 पसंदीदा लोग थे? देखिए मैंने मैंने अभी वो जो मेरी लेटेस्ट बुक आई है, इट्स कॉल्ड लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजंस, 50 people who influenced India. I realized, and these are all the 50 people who are no longer are there in this world. They are dead. So it is, it's a obituary, this thing, but it's like a full name, because I realized that people forget very quickly. We have no memories of people who who made lot of sort of sacrifices or efforts and all. And these are so I wanted to write some kind of factual, again anecdotal, वो किस्से कहानियों वाला, कि लोगों को उसमें मजा आए, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो. तो उसमें बहुत सारा, अगर आप लोगों को मौका मिले तो उसमें देखिए, मैंने उसमें जैसे फूलन देवी को भी शामिल किया है, क्योंकि फूलन देवी was she had a reputation, and when she became member of parliament, this is also happens in democracy. So I was in parliament, so I met her a few times, and she was very, I mean, nice person, in the sense that you would not think of that. So there are a lot of stories that I have written. So one day somebody wanted to make a movie on her. In France, a movie was being made on Poolan Devi. So she was called by the producers and all. They paid for her. So in Paris, Poolan Devi was going in limousine. Suddenly she sees that somebody was selling watermelon. She said, "Roko, roko, roko." Car stopped. Poolan Devi got off from this. "Kitne ka hai?" She was speaking in French. Anyway,
वो करके, and then that limousine driver, to his horror, he realized that she started eating watermelon. वो खरबूजा रहता है, उसने गाड़ी में खाना शुरू कर दिया, and you know that water started pouring out, and so he tried to, again French being French, he tried to object. She said नहीं इसको ऐसे ही खाते हैं. So these are the things, the image of Phula Devi you see, or you kind of, it comes to your mind, was very different from what she was. Similarly, so I have written about many people who are from very diverse background. I don't want to speak from this kind of thing because I don't like to speak from political position, but I also have a chapter on Sheikh Abdullah, which is very interesting, that how somebody who was very kind of ultra nationalist or so, and later on it became, so it tells you a story in nutshell about Kashmir. Then I have about Lal Dinga, who was there in Mizoram. All those things, how these people came up, what they did, and of course it has many politicians. I've also written, allow me to say, because he's from Raisa, I've also written about this person, Chandra Swami. I don't know, many of you must be knowing. So Chandra Swami was a very interesting man, and I've quoted Mr. Natwar Singh was that time he was a Deputy High Commissioner in England. So Chandra Swami goes to meet Margaret Thatcher, who was yet to become Prime Minister. And because now Chandra Swami did not know word of English, so Natwar Singh was doing this translation. So Thatcher was not impressed, because Margaret Thatcher was also like Indira Gandhi, she was a strong person. So Chandra Swami tells through interpreter, I mean through Natwar Singh, he says कि आप इनसे पूछिए, 3 सवाल मुझसे पूछें, और जो ये सवाल एक उस पे कागज पे लिखें, और मैं बता दूंगा कि सवाल क्या है. So Natwar Singh translated, she wrote something, scribbled, इन्होंने, he said it, इन्होंने बता दिया. तो Thatcher thought it's a fluke. Second time also, तीसरी बार बताया. तीसरी बार जो उसने सवाल कुछ और, she must have thought of something freak, वो भी इन्होंने बता दिया. Now she was totally this thing. Exact. So she said that I don't have much time and all, so we should meet again, and she started showing interest. So अब Chandra Swami became Chandra Swami. He said कि इनसे कहना कि मंगलवार को मिलेंगे. So for a diplomat it was very difficult to set terms to. She was leader of opposition at that time. That on Tuesday only he is available. So he said please don't say that. He said no, उनसे ये भी बोलो कि लाल पोशाक पहन के आए, wear the red dress. Natwar Singh was, and the meeting was fixed at Natwar Singh's house, Deputy High Commissioner. And lo and behold, Thatcher comes and in the red dress. And he tells her, he said, you will get these many seats. Okay. And that exactly whenever the elections were held, Thatcher got those many seats. How he did it and all that, I mean, so we have an image of him being some kind of operator or a crook or something, but he had influence. Why was he so influential? I have written a story about, I don't know, many of you may not know, about Mr. R.K. Dhawan, who was a very close aide of Indira Gandhi. Yes. Indira Gandhi lost 77 elections. Recently, by the way, that many of you may have seen that recently this Mr. Mohan Bhagwat went to a mosque in Delhi. Yes. So, उस mosque का जो that boy that he went, I mean, not, he was a boy in front of me, but anyway, that Imam he went, his father was a very was a Muslim version of Chandra Swami. So Indira Gandhi lost 77 election. I have written it, so I want to tell you the story. You may find interesting. तो वो इंदिरा गांधी 77 का इलेक्शन हार गई 77. She was very dejected. So Dhawan took this person, Maulana Jabir Ilyasi, the father of this Ilyasi, to his to Indira Gandhi's house. तो उसने बोला कि आपका तो बड़ा समय ठीक नहीं चल रहा, ये आप ये ताबीज ये इसको यहाँ लटका दीजिए. और तो उन्होंने कहा लटका दो, उसका नहीं, आपको अपने बेडरूम में लटकाना होगा. So he had access to the bedroom. And he said कि जब वो आपको इतनी सीटें मिलेंगी, whatever 354 or whatever he said कि मिलेंगी, और जब वो हो जाए तो ये बड़ा पावरफुल तावीज़ है, आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं उसको निकालूंगा. 80 election took place. Indira Gandhi won. Obviously, when she won, she never cared about this Ilyasi and that thing, the taviz, etc. As I would say, luck would have it, a very unfortunate thing. And 23rd of June 1980, Sanjay Gandhi died in an air crash, freak air crash. So Indira Gandhi's world came crashing down, and she was obviously, for a mother to lose a young son and all, she was terribly devastated.
No, Mr. Ilyasi comes in and he says, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, इसको आपने नहीं हटाया. So he said, she said, what do I have to do now? He said, no, now you have to pray also. So she said, I don't pray. मतलब उसने बोला आप नमाज पढ़ के आपको नमाज पढ़नी होगी. इंदिरा गांधी said, मुझे तो नमाज आती नहीं. No problem. Whatever I do, you just follow. So imagine the Prime Minister of India. I'm not talking about any belief system and all. Please, I mean, in today's world, it's Aparaji is very difficult to talk about these things. At least most of us don't think that way. तो वो आगे खड़े हुए इंदिरा जी पीछे और उन्होंने उनको दो वो जो होती है like you know the दो रकात नमाज पढ़ाई. So these stories are, I mean, I find it very fascinating actually, and I think people because we have very different image of Indira Gandhi. Of course, it has an element of tragedy and all this thing, but so I have written many such things. Tell us one story which was not a part of those 50 and you would like to share it with us. The 51st story. I'm sure it must have been very difficult. So we'd like to know the 51st story which was there. No, sir. That did not find its place in the book. I have written these things, and I've written about Mr. Kotrochi also, that Bofor's person. So he was very close to his wife. They were very close to Sonia Gandhi, and they used to have this in Rajiv Gandhi's house. When he was Prime Minister, they used to have Sunday brunch kind of thing and all of that. Those stories that you are saying, and Okay. I will come out. There are. Okay, I understand. We totally understand and respect it. Coming to your book, Neta Abhineta, I'd like people to see this book. I think this book is about all the Abhinetas who've become Neta. So tell us two interesting stories and why did you choose to write about them? ये तो वैसे भी इतना ज़्यादा public figure थे और अभिनेता थे और जो भी अभिनेता होता है वो नेता बनने की एस्पिरेशन वैसे भी रखता है क्योंकि more power and more influence and everything more. I think all of us, are quite fascinated by politics at the same time, or films also. And of course, somebody can say cricket, or same thing about cricket also. So I was always very fascinated by this thing that why film stars are drawn towards politics. What is the reason? One can say that fame and fortune and all that, but that's not. So I went quite deeper into it, and I realized it's a very kind of interesting thing because film stars want to have some kind of longevity in, what was there in real life. They want to extend it, but they realize that politics is a very difficult position. I think most politicians, of course not in Tamil Nadu, but most politicians are quite misunderstood, but their contribution is immense. I mean, if you look at, I won't just go on again to keep talking about Jayalalitha's welfare schemes or Karunanidhi's contribution, even N.T. Ramarao, very interesting character, and this whole thing that we talk about, the free ration, free food or subsidized rice, it was all, he started it. Even in 1983, he had a huge yatra, that all those things, Rahul Gandhi is doing yatra and Narendra Modi had done yatra, all politicians do yatra, but the actual yatri was that Chaitanya Yatra of 1983 was a very historical yatra that N.T. Ramarao had done. So I think politicians are very much misunderstood, and I was just telling Poonam ji, when she picked me, very kind of at airports, I was telling her, look, there are simple things that people miss out. Like Lata Mangeshkar, she was also a member of parliament, a nominated member of parliament, and there were a lot of stories came in media and came thing applied to even Sachin Tendulkar that they don't attend parliament. So it is critical of them. They can't defend themselves. Now, I'm telling you in a nutshell, and that was not the reason to write book, but just to explain that actually nominated members are nominated by government. They don't ask for it. It's their contribution in public life. It's a recognition that since parliament has a representation of everyone, such people who cannot win or don't fight, they can also figure in. So it's a recognition. Second thing is, in parliament functioning is this, that for every issue, suppose there is a debate, as we know, debate takes place. So in debate, time is allotted to political parties, like BJP is given, suppose there is a 2-hour debate,
So the BJP now having numbers, it will have 30 minutes. The Congress will have 15 minutes. All there are 43 political parties, so they all have some time. When all the time for 43 parties are as per rule, I'm telling you, it's not a whims and fancy. 43 political parties are exhausted, then they come independent MPs. After that, nominated MPs can speak, and the time allotted to nominated MPs is 2 minutes. So you imagine any professional, whether it's or a person like Lata ji, she would sit for 5 days a week just to get to speak for 2 minutes. I mean, this is a procedural thing which many people do not know. So therefore, all these things when you see, people like Sunil Da, people like the many film stars have made a lot of very good contribution, and they have done a lot. Of course, when you get to read, you will get to read a lot of stories and anecdotes about Amitabh Bachchan, Rekha, Vijayanti Mala, and Dilip Kumar. Jaya Amar Singh. Dilip Saab has written, Dilip Kumar, just for your interest, कि वो एक दिन मद्रास में कोई फिल्म शूटिंग हो रही थी और जवाहरलाल नेहरू आए. सो उनको अब मतलब आप उसको वैनिटी भी कह सकते हैं, जो भी. सो उनका कहना था कि वो जब नेहरू आए तो नेहरू सबसे पहले मेरे पास आए, वो वेजू के पास नहीं आए, मतलब विजयंती वाला को. और विजयंती वाला ने कहा था कि नेहरू जी मुझसे मिलने आ रहे. सो अब अगेन दिस हैपेंस इन स्कूल, कॉलेजेस एंड सोशल ग्रुप्स. But imagine this is happening at Dilip Kumar and Vijayanti Mala level. So again I am saying these are all human beings in flesh and blood. They have likes and dislikes and aspirations. जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, वो हम लोगों मतलब से किसी से कोई डिफरेंट नहीं होते. Super. मैं तो सवाल पूछती जाऊंगी, but I think now is the time when you all can ask questions from Mr. Rasheed. See, he's a storehouse of information, anecdotes, and his anecdotal writing, is really, really well appreciated. So, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, if you have any questions, please raise your hand. जी, बिल्कुल. Today's social media plays a major role. And there are so much of fake news circulating about political leaders, about everybody in fact. So when your stories are very factual, why don't you promote them on social media so that at least people get to know good stories, factual stories? Thank you very much. That's a very, I take it as a huge compliment. But actually, the book that you have in hand, that's actually came in response to your question. ये भारत के प्रधानमंत्री यानी पर्पसली रोट इन हिंदी, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे देश की जो अभी राजनीतिक स्थिति है उसमें बहुत सी बातें गलत फैलाई जा रही हैं, और ये एक पार्टी के बारे में नहीं, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा. और उसका सादा का सादा ये क्योंकि हम लोग इतने कॉन्शियस या अलर्ट नहीं है. मतलब जो खासतौर से यंगर जनरेशन है वो उस चीज़ को बहुत आसानी से सिर्फ एक्सेप्ट भी कर लेती है और सर्कुलेट भी करती है. जैसे एक बात बहुत कही जाती है कि जवाहरलाल नेहरू ने व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ही गेव भारत रत्न टू हिमसेल्फ. In 1954 Bharat Ratna was given to Jawaharlal Nehru, there is no doubt about it, but the facts are very different. So I have written in this book, ये भारत के प्रधानमंत्री में, कि जवाहरलाल नेहरू उस समय ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह के टूर पे गए थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, who was also a very eminent person, a towering person, he decided, and he has written in his, and I have quoted his collected works of Dr. Rajendra Prasad. In his autobiography, he has written that for the first time he did something unconstitutional. In the sense, he has written just in the sense that as per the constitution, the President of India acts as per advice of the Prime Minister. So he did not take Nehru's advice in giving him Bharat Ratna. So when Nehru returned, so a ceremony was done, but because Nehru's contribution was so big that the felicitation, that citation was not read. And it was not a big deal because 1953 for the first time Bharat Ratna was given, and second next year
it was given to Nehru. So the facts are very different. This is not in defense of Nehru, but just to say that. So there, in this book, there are many. I have tried to make a lot of things which are there in the, so to say, WhatsApp university. देयर इज डिसइंफॉर्मेशन. देखिए डिसइंफॉर्मेशन भी दो तरह की होती है. एक ये बात होती है कि मुझे कुछ पता नहीं है या मेरे से भूल चूक हो गई. एक ही होता है कि मैं जानबूझ के करता हूँ, और वो बहुत डेंजरस होता है. देयर इज नो वे. देखिए लॉज आर वेरी लिमिटेड. एवरीवन कैन नॉट बी सेंट टू, एंड दिस इज अनफेयर ऑल्सो. व्हाट इज अ सोर्स, इट बड़ा मुश्किल होता है. वो फिर कहाँ से, जो आप जानती हैं कि बहुत सारे ट्रोल जो है वो इंडोनेशिया और बांग्लादेश और रशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हैं. यू कैन नॉट ट्रेस द ट्रेल ऑफ वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. तो इन सब चीज़ों की बड़ी सारी समस्याएं हैं. हमें सिर्फ, मुझे लगता है कि फर्स्ट 30 seconds इन व्हाट्सएप आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू गेट अ मैसेज, you read it, or you, whether you want to forward it or not, that kind of pulse is, if you can control it and see that whether it's good, or it's it's worth spreading or not. Because I'm saying in kind of class that you move in, it's not happening. Not much of a problem, but believe me, in a lot of places, lot of this kind of thing is creating a lot of problems. And this is not confined to a community or a section or a region or anywhere. It's affecting everyone. So we need to be on this. Actually problem क्या है कि social media का जो वो characters का वो होता है ना, it needs to be very short and brief and crispy. वो जब तक हम पूरी कहानी ना बताएं, वो तब तक आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा. यू हैव टू एक्सप्लेन राजेंद्र प्रसाद कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. In fact, his story of, I think yesterday it was very popular on Twitter. वो India Today वाली जो story थी, he had to explain something about the ongoing Rajasthan political system. Let's not make it political. So if you follow him on Twitter, or you will see that बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलुओं को, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों को कितनी आसानी से बता देते हैं. देखिए उसमें सिर्फ जो आप अपराजी नहीं बता पाया उसको बताना चाहूँगा कि देखिए हमें उसका कोई अच्छे बुरे का नहीं करना होता. जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपराजित तो राजस्थान की है, तो ये हो सकता है वो कि जैसे अशोक गहलोत हैं, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट हिम और हियरिंग अबाउट हिम. तो वो चीफ मिनिस्टर राजस्थान, वो अब हम उनको कह दें कि वो गलत हैं या सही हैं, दिस इज जजमेंटल ऑन माय पार्ट. मैंने उनका 1987 का एक किस्सा लिखा, और वो किस्सा मतलब फैक्चुअल है, और उसमें जो पार्ट उनका था या नहीं था, दैट आई हैव लेफ्ट इट टू द रीडर. सो व्हाट हैपेंड वाज, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक अपनी कैबिनेट की मीटिंग सरिस्का नेशनल पार्क वहाँ पर रखी थी. ही वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली. उस वक्त राजस्थान में बड़ा ड्राउट आया हुआ था. इट वाज अंडर अ सीवियर ड्राउट. सो राजीव गांधी issued a directive or appeal, whatever you want to call it, that government of Rajasthan should not use official vehicles just to as an austerity measure. One Mr. Haridev Joshi, a very senior leader, he was the chief minister of Rajasthan. So Rajiv Gandhi drove that car, was given to him, gifted to him by that King Hussein of Jordan. So it was a Mercedes SUV at that point of time. So the distance between Delhi and Sariska is 170 kilometers. So Rajiv Gandhi was going, he drove his own car and he was going to Rajasthan. As he entered Sariska town, a very small town, he saw a traffic constable, and a traffic constable gave him a direction that you turn to right. Rajiv Gandhi turned, his whole convoy turned, and there it was an open field and hundreds of cars were parked. Okay. And Rajiv Gandhi got very angry that I had said that not use official car for this cabinet meeting, and so many official cars are there. So poor Joshi ji, he lost his job. Now nobody knows that who kind of thought of this idea of directing Rajiv Gandhi through planted this story. Constable showing it to way to Rajiv Gandhi. So some people, at that time the word was it was Mr. Gehlot. So but I have not emphasized on that particular point. This is, reader can find out who it can be. So what I'm saying, this tells you about the mind of a person. So वो उन्होंने उस टाइम में ऐसा किया था, तो nowadays also he can do whatever he wants to. Any more questions? Yes, please go ahead. जैसे कि अपराजी ने बोला आपसे कि
स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कितना इम्पोर्टेंस होता है एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए। आपने 62 का एग्जाम्पल भी दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी सेड टू प्रधानमंत्री एट दैट टाइम टू कॉल फॉर द इमरजेंसी पार्लियामेंट मीटिंग। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है? आपके सामने अगर राशिद किदवई जैसा सीनियर जर्नलिस्ट बैठा हो तो नहीं, धन्यवाद। देखिए बड़ा इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तो ऑब्वियस जवाब है कि नहीं है, विपक्ष उस तरीके का नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन आप अगर उसको विपक्ष को आप अगर सिर्फ कांग्रेस के नज़र से देखेंगे तो कमज़ोर है, लेकिन अगर आप रीजनल पार्टीज का देखेंगे, इफ़ यू लुक एट मैप ऑफ इंडिया, देखिए अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ, उससे पहले बिहार में भी इलेक्शन हुआ था, नॉट दिस टाइम, उससे पहले वाला इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन हुआ। सो एंड ऑफ कोर्स नॉट टू टॉक ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु एंड इनफैक्ट जस्ट एज अ जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो इसमें मैं सिर्फ देश में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां राहुल गांधी की पर्सनल रेटिंग्स इज हायर देन नरेंद्र मोदी। Only 3 states. I mean, you will be surprised why 3 states. That's a different question. But one state is Tamil Nadu, by the way. Which are the other 2? Other is Kerala and Punjab. So these are 3 states there. So that explains why his yatra started from. I mean, Tamil Nadu was just a beginning, but more so in Kerala and all. So, but the regional parties are doing very well. You look at in Odisha, you look at map of India, you will see half of India is actually has non-BJP opposition party, but they are not strong. So there is no unity of or purpose. So this happened, but this always happens. देखिए मैं आपको बताऊं, जब इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था तब भी ऐसा नहीं था कि विपक्ष के पास में लीडर नहीं थे। जैसे वाजपेयी जी की मैंने बात करी, बहुत से लोग थे, ज्योति बासु थे, राम मनोहर लोहिया थे, बहुत से लोग थे। तो उसकी जो है ना वो चीज़ जो है विपक्ष की जो है वो हमेशा से थी। लेकिन जो एक पकड़ होती है, अब जैसे अभी मोदी जी का एक तरीके का जादू चल रहा है, मतलब 8 साल हो गए और भी अभी ऐसा लगता है कि रहेगा, वो एक अलग चीज़ होती है। अलाउ मी टू से वन थिंग, सॉरी जस्ट इन्होंने जो मुझे बात की उससे मुझे वो याद आ गया। देखिए जो हमारे कंट्री में जो किताबें 2-3 तरह की लिखी जाती है, एकेडमिशियंस हु राइट, हिस्टोरियंस, and they write, I think they write far better and books than mine and all about Indian history and all. Like for instance on Jawaharlal Nehru you will come across maybe hundreds of books are written which tells you about Nehru's greatness or shortcomings and all, but what was he like, that you would not know. तो अभी किसी का मैं किसी और की बुक पढ़ रहा था, तो उसने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई वाई आई एम राइटिंग बुक ऑन नेहरू। जैसे मेरा जैसा आदमी, मैं नेहरू के बारे में लिखने लगूँ तो मेरी हैसियत नहीं, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए ये सब हिस्टोरिकल किताबों में कहीं नहीं आता कि जब 1962 का इलेक्शन हुआ, सो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कंटेस्टेड अगेंस्ट नेहरू फ्रॉम इलाहाबाद फूलपुर सीट। So Nehru, of course, Nehru won by over 1 lakh votes, but Nehru was very upset with the outcome of that election because he realized in one polling station, like means one village, Nehru did not get a single vote. So old man, he used to be very agitated कि ऐसा कौन सा गांव है इलाहाबाद में कि जो मुझे एक भी वोट नहीं मिला। And in 27 polling stations, that means again 27 or more villages, Dr. Lohia had led. He got more votes than Nehru. So again, it kept bothering Nehru that, am I becoming so, unpopular? Like if you've seen that Crown, Churchill used to have that serial, and Churchill used to have a lot of problems about, am I really old? Am I really this? तो अब ये चीज़ें आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी कि सोनिया गांधी और अमिताभ बच्चन में क्या डिफरेंसेस हुए। तो ये आपको इतिहास की किताब में कहीं नहीं मिलेगा। वो किसी ने उनकी जस्ट गिव यू क्लू, उन्होंने किसी ने सोनिया गांधी की जन्म कुंडली बना दी, हॉरोस्कोप, by saying that you have no future in politics. So when she joined politics, and of course she did very well in a sense, one can say that, then she realized that there was a conspiracy by Jaya Bachchan, she didn't want me to be in politics. So ये बातें आपको मतलब that I'm saying, you would not get it from either from academic books or historical books, etc. So if
Aparaji permits me, I will ask one more question. Please. This is regarding, like, sir, as I have seen your work, we see that you try to gather so much of details and data about these political leaders and the families, like you have just spoken about House of Sindhyas and all. How difficult it is to get those information and how difficult it is to publish those. Because I'm very sure publishing those kind of the details and data, like you said about Saas Bahu, having a fight in such a big gharanas and all, how difficult it is as a writer to publish those things, because you would amount to so much of criticism from that particular family, and even feelings and sentiments can be hurt of the people. I think, yes. Very difficult. I think, look, all professions are very difficult and challenging. The profession you come from is very difficult. I'm saying generally speaking, so every has a profession, has a challenges, journalism or writing. If you have, I'm not talking about me, but if you have kind of courage of conviction, if you, आपकी अगर नियत ठीक हो, आप और उसमें सिंसियर, देखिए एक दिन में एक चीज़ कोई नहीं मिलती है. मैं आपको बताऊं, मैंने जर्नलिज्म में आया और उस पे मेरे जो जहाँ मैं काम करता था, उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप उस टाइम की बात है कि मैं पहले स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था, जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में था, उस पर राजीव जी की हत्या हुई थी, असैसिनेशन. तो उसके बाद सोनिया गांधी ने क्या करा कि एक राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया और उसकी अमेठी में कोई एक्टिविटी थी. तो वो हमारे एडिटर ने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ अमेठी और देखो ये क्या करती है. अब ये इट वाज समबडी कुड हैव सीन इट एज अ वेरी काइंड ऑफ पनिशमेंट थिंग. सो मैं गया. अच्छा, सोनिया गांधी बिल्कुल अभी भी बहुत कम बोलती हैं और पहले भी बहुत बोलती नहीं थी. मैं वो स्लीपर क्लास में गया और वो वहाँ पर थी, मैं उनको देखता था वो काम. तो मुझे एक चीज़ हमेशा से बड़ी उस समय लगती थी कि वो ऑब्वियसली शी वाज अ विडो एंड she was going through very difficult time, but she would always wanted to hear people what they are saying. मतलब जो गांव में लोग बात कर रहे होते थे या कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आता था, तो उससे वो ज़रूर बात करती थी और कुछ फीडबैक लेती थी. और उन्होंने जो आफ्टर 1 year of mourning period, she started meeting lot of political people, अलग अलग जगह के लोग, सब लोग उन कंडोलेंस के लिए आए. उसके बाद तो मुझे लगा कि देखिए इनको शी हैज इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, क्योंकि वो नहीं मिलती. सो आई एम सेइंग उस वक्त जो मैं उनके साथ में रहा या उनको दूर से देखा, साथ में तो नहीं रहा कि मतलब शी वुड नॉट कॉल मी एंड से हैव अ कप ऑफ टी और टॉक टू मी, बट आई ऑब्जर्व्ड हर. सो आई रियलाइज दैट शी हैज इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. उस वक्त मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से ये सब होगा, ये तो अलग बात है. तो मेरा कहना ये है कि आपको आंख कान खोले रखें, और अगर आपकी इंटीग्रिटी है. और मैं आपको बताऊं, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं, लोग बुरा समझते हैं. मोस्ट पॉलिटिशियंस एंड बाय द वे आर नॉट वेरी करप्ट आल्सो. इट्स वी हैव अ वेरी करप्ट सिस्टम. असेंबली की जो इलेक्शन लड़ने की सीलिंग है 45 लाख है. पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ने की जो खर्चे की है वो 75 लाख है. So we are allowing, on everyone we know, it's an open secret, and of course everyone knows in Tamil Nadu knows much better, that people spend at least 10 times more. 10 times is also, I am saying, very diluted thing. So ये पैसा कहाँ से आता है? And mind you, that is also explains why Aparaji there is dynasty culture. क्योंकि आपके पास अब ऐसा पैसा आता है जिसे हम 2 नंबर का कहते हैं, और उसको रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने, यू नीड फैमिली मेंबर जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं. एक मुख्यमंत्री के घर में मैं एक बार मिलने गया उनसे, दिवाली का टाइम था, तो वो बड़े परेशान थे. मतलब ही वाज नॉट इन हिज सो टू से इन हिज रियल एलिमेंट्स. तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि अरे वो एक मिठाई का डब्बा था, पता नहीं कहाँ चला गया. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, काजू कतली कोई कहीं और से आ जाएगी. कहने लगे अरे नहीं तुम, वो ऐसे ही बोल गए, अरे वो काजू कतली नहीं, उसके नीचे वो सोने की वो मूर्तियाँ थी. पता चला उनका रसोईया लेके वो फरार हो गया. You can't even file a police case कि मेरा मिठाई का डब्बा चोरी हो गया. So I'm saying this is a very corrupt system we have. But politicians तो बेचारे, देखिए उनके घर में इतने लोग आते हैं. अभी तो कोविड का टाइम था, वैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं. उनको कम से कम चाय पिलानी पड़ती है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है. अभी तो खैर चिट्ठी का कॉन्सेप्ट कम हो गया, बट ऑल दिस थिंग कॉस्ट मनी. And we tend to say that no, money is not required, money is bad. So ये जो है ना, if we start paying the way like American senators are paid, even the British Parliament people are paid much better. हमारे यहाँ आधे तो MPs कहते हैं वो टैक्स पेयर नहीं है.
So who would believe it? So we are presiding over a very corrupt system. Please, over to you. Thank you. In Neta Abhineta, do you have Jayalalitha, MGR, NTR, all of them in that? Yes, I have, but not in a very focused way. There is a whole chapter. See, I had linguistic limitations to actually really focus on them, but I have dealt with them. I think they are very different from the so to say the Bollywood stars. I mean, the whole idea of politics and not so much politics about the social movements and all is not even 1/10 of what is there was there in Tamil Nadu or in Andhra, etc. Yes. Would like to invite Ms. Aishwarya to honor our guest for today. I think let's have a huge round of applause. Thank you for your patience and hearing it, because Thank you so much for that. Thanks. Such a wonderful. Thank you. I think on behalf of the Prabha Khaitan Foundation, I really request Poonam ji to kindly deliver a formal vote of thanks. Thank you for the wonderful Kalam session by Mr. Rasheed Kidwai. Thank you, sir, with such lovely stories, and you really kept our audience engaged. Today's Kalam event with Mr. Kidwai was absolutely delightful. The conversations were riveting and enjoyable for the literary enthusiasts of Coimbatore. On behalf of Prabha Khaitan Foundation, Rupa and I would like to express a sincere gratitude to Mr. Rasheed Kidwai and Ms. Apra Kuchal on behalf of the foundation. I also express my sincerest gratitude to our patrons, Shree Cements Limited, our associate Welcome Hotel by ITC, and the wonderful audience for making a Kalam session in Coimbatore a grand success. Thank you.